CBSE Mathematics Class 11th Chapter 15 Exercise Miscellaneous Exercise. Question number 5. The mean and the standard deviation of 20 observations are found to be 10 and 2 respectively. On rechecking, it was found that an observation 8 was incorrect. Calculate the correct mean and the standard deviation in each of the following cases. If the wrong item is omitted. Second, if it is replaced by 12. Now let us proceed the solution. You see, given x bar x is equal to sigma I is equal to 1 to 20 xi by 20, that is 10. It is already given. And standard deviation root of 1 by 20 sigma I is equal to 1 to 20 in bracket xi minus bar x bracket closed whole square is equal to 2. Now, summation I is equal to 1 to 20 xi will be equal to, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 into 10, that is 200. Now on squaring, in the standard deviation we will get summation of I is equal to 1 to 20 in bracket, इसका स्क्वायर कर दिया हमने, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स आई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू एक्स आई प्लस 10 का स्क्वायर किया, क्योंकि बार एक्स जो है वो 10 है, सो बार एक्स के जगह पर हमने 10 रखा, सो 10 का स्क्वायर किया 100 आ गया. अब ये 1 by 20 है, दैट विल बी मल्टीप्लाइड टू स्क्वायर ऑफ इट, क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये 4 हो जाएगा, 4 इंटू 20. नाउ फ्रॉम हियर वी विल गेट सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to 20, एक्स आई विल बी इक्वल टू 200, एंड इन दिस केस सिग्मा I is equal to 1 to 20 xi square minus 20 sigma I is equal to 1 to 20 xi plus sigma I is equal to 1 to 20 100, that will be equal to 80. Now sigma I is equal to 1 to 20 xi square minus 20 into summation of xi, that is 200. So in place of this, sigma I is equal to 1 to 20, xi is equal to 200. So put this value here. So 20 into 200 plus, now summation of 100. How many times? 20 times. So 20 into 100, it will be equal to 2000. Here it will be 4000. माइनस कर रहा है इसको, तो माइनस का हमें 2000 मिलेगा, ट्रांसपोज किया तो 2080 हो जाएगा. सो सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to 20 एक्स आई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2080. नाउ द क्वेश्चन स्टार्ट हियर फ्रॉम इन केस 1, that is if the wrong item is omitted, means 8 is to be omitted. So at that time, if you are omitting it, the number of observation will be 20 minus 1, that is 19. So summation I is equal to 1 to 19 xi will be equal to 200 minus 8, that will be equal to 192, and summation I is equal to 1 to 19 xi square will be equal to
2080 माइनस 8 स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पर 8 स्क्वायर का होना चाहिए सर. सो 8 स्क्वायर का माइनस कर दिया, देन इट विल बी इक्वल टू 2016. नाउ द मीन वैल्यू विल बी इक्वल टू बार एक्स, दैट विल बी इक्वल टू summation of I is equal to 1 to 19 xi upon 19, that will be equal to 192 by 19. देखिए हमने निकाला था अभी ये 192 by 19, so it will be equal to 10.1. It should be xi. So now you see the summation of I is equal to 1 to 19 xi upon 19, that will be equal to 192 divided by 19, and it is equal to 10.1. Now variance will be equal to sigma square, that is 1 upon 19 summation of I is equal to 1 to 19 xi minus bar x का whole square, that will be equal to 1 upon 19 summation of I is equal to 1 to 19 xi minus 10.1. x bar x के जगह पर हमने 10.1 रख दिया का होल स्क्वायर. अभी इसको एलॉबरेट करेंगे. 1 upon 19 एज इट इज़. So summation of I is equal to 1 to 19 xi square minus 2 into 10.1 into summation of I is equal to 1 to 19 xi plus summation of I is equal to 1 to 19 102.01 मीन्स 10.1 का स्क्वायर कर दिया हमने. 10.1 का स्क्वायर किया तो 102.01. फर्दर इसको एलॉबरेट किया 1 अपॉन 19. देखिए सिग्मा वेरिएंस निकाला है. इन ऑर्डर टू रिमूव द स्क्वायर रूट, पहले हम वेरिएंस निकाल लेते हैं, बाद में से उसका स्क्वायर रूट निकाल करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे. सो इट विल बी इक्वल टू 2016. देखिए यहाँ पर समेशन ऑफ xi स्क्वायर from 1 to 19, so it will be equal to 2016. Substitute this value here. 2016 minus 2 into 10.1, that will be equal to 20.2 into 192 xi. Summation of xi, that is 192 यहाँ पर substitute किया. Now 102.01, how many times it will come? 19 times. So I have just multiplied it here. 102.01 into 19, because we have to write 102.01 100 how many times? 19 times. So it will be multiplied by 19. Now see the sigma square will be equal to 1 upon 19 2016 plus 1938.19. इसको मल्टीप्लाई करने पर ये मिलेगा. इसको मैंने पहले लिख दिया, माइनस को इधर कर दिया. दिस विल बी इक्वल टू 3878.4. इसका मल्टीप्लाई करने पर इधर आएगा 1 अपॉन 19. अब इन दोनों को फर्स्ट और सेकेंड टर्म को प्लस कर दिया. 3954.19 माइनस 3878.4. इसको सब्ट्रैक्ट किया, विल गेट सिग्मा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 upon 19 into 75.79. After on dividing by 19 we will get 3.98. So in order to find the standard deviation,
sigma will be equal to the square root of this variance, that will be equal to root of 3.98. It is equal to 1.99, and this will be the required answer of the first part of the question. Now the second part, if it is replaced by 12, if 8 is replaced by 12, here you see, if 8 is replaced by 12, in that case, if 8 is replaced by 12, this implies that summation of I is equal to 1 to 20, xi will be equal to 200 प्लस 12 माइनस 8. अब देखिए 12 डालना है और 8 को हटाना है. सो 12 माइनस 8, दैट विल बी एडेड इट. सो इट विल बिकम 204. मीन्स टोटल तो दिया हुआ हमारे को पहले ही, बस उसमें से हमारे को और कितना चाहिए. 12 को हटा रहे हैं और 12 को डाल रहे हैं, तो लिख रहे हैं किसके जगह पर, 8 के जगह पर. सो इसका डिफरेंस को हम ऐड कर देंगे, दैट विल बिकम 204. 204. नाउ द मीन, न्यू मीन will be equal to 204 divided by 20, it will be equal to 10.2, and this will be the required answer. And summation of I is equal to 1 to 20 xi square will be equal to 2080 plus 12 का स्क्वायर किया माइनस 8 का स्क्वायर किया, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस टू, that will be equal to 80. So 2080 plus 80, it will be equal to 2160. Now the variance will be equal to, variance is equal to sigma square, that is 1 by 20 in bracket sigma I is equal to 1 to 20 xi whole square, xi square minus 2 into 10.2 summation of I is equal to 1 to 20 xi plus summation of I is equal to 1 to 20 10.2 10.2 का स्क्वायर कर दिया. ये न्यू मीन है. सो नाउ इट विल बिकम, बिकॉज 1 by 20 summation of I is equal to 1 to 20 xi minus 10.2 का होल स्क्वायर, इसी का एलाबोरेट इधर किया है लेफ्ट हैंड साइड में. नाउ 1 by 20 xi का स्क्वायर करोगे, xi का स्क्वायर करने पर कितना मिला हमारे को, 2160 माइनस 20.4 इंटू 204 प्लस 104.04 इंटू 20, इसको किया 1 by 20. अब हमने इसका प्रोडक्ट और ये फर्स्ट लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को नज़दीक ला करके प्लस करेंगे. 1 by 20 2160 प्लस 2080.8 माइनस 4161.6. Ultimately it will be equal to 1 upon 20 in bracket 4240.8 minus 4161.6, and it will be equal to 1 upon 20 into, after solving it, the bracket, you will get 79.2. Now divide it by 20, you will get 3.96. So in order to get the value of standard deviation, take the square root of this, because it is a variance. वेरियंस का सिग्मा स्क्वायर होता है, तो केवल सिग्मा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे. रूट ऑफ 3.96, दैट विल बी इक्वल टू 1.98, एंड दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर इन केस नंबर 2.
There are two answers in each part, 10.2 and 1.98. Now come to the question number 6. The mean and the standard deviation of marks obtained by 50 students of a class in 3 subjects, mathematics, physics, chemistry, are given below. Subject देखिए mathematics, physics, chemistry. Mean of mathematics is 42, physics is 32, chemistry is 40.9. Standard deviation of mathematics is 12, physics 15, chemistry 20. Which of the 3 subjects shows the highest variability in marks and which shows the least variability? Now the coefficient of variance, that is CB for maths, will be, this is the standard deviation, that is 12 upon 42, that is mean, into 100, that will be equal to 28.57. Coefficient of variance physics will be equal to 15 divided by 32 into 100, it will be equal to 46.87. Now the coefficient of variance chemistry will be equal to 20 upon 40.9 into 100, it will be equal to 48.89. The variability in descending order, I have written here, the chemistry is most variable, physics सब्जेक्ट का जो वेरिएबिलिटी है उसके बाद, एंड द लास्ट द मैथमेटिक्स. इसी जस्ट आई हैव रिटन द वैल्यू ऑफ CB, that is 48.89 is greater than 46.87 and it is greater than 28.57. The highest variability is in chemistry, the lowest variability is in mathematics. Now proceed to the question number 7. The mean and the standard deviation of a group of 100 observations. Hundred observations were found to be 20 and 3 respectively. Later on it was found that 3 observations were incorrect, which were recorded as 21, 21 and 18. Find the mean and the standard deviation if the incorrect observations are omitted. देखिए, bar x is equal to summation of I is equal to 1 to 100, xi upon 100, it is equal to 20 given. So the summation of I is equal to 1 to 100, xi will be equal to, cross multiply here, 2000. 100 into 20, you will get 2000. Now the variance will be equal to sigma square 1 upon 100, summation of I is equal to 1 to 100, xi minus 20 होल स्क्वायर. देखिए ये 20 है, यहाँ पर मीन रख दिया, मीन की वैल्यू रख दिया. सो xi माइनस 20 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू 1 upon 100 x summation of I is equal to 1 to 100 in bracket xi square minus 2 into 20, that is 40, xi plus 400, and it is already given, that is 3. So in order to variance, we will take the square of it, that will be equal to 9. Now summation of I is equal to 1 to 100 xi square minus 40 into summation of I is equal to 1 to 100 xi plus summation of I is equal to 1 to 100 into 400, that will be equal to 9 into 100. मीन्स उधर से ले लिया मैंने, डिनोमिनेटर पार्ट का 100 इधर आ जाएगा, सो 900 हो जाएगा. नाउ the summation of xi square I is equal to 1 to 100 will be equal to 900 plus 40 into
2000, ये 40 इंटू 2000 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस इसका 400 इंटू 100, इसको सॉल्व किया, यू विल गेट 40,900. This will be the summation of xi square. Now when the incorrect observation, that is 21, 21 and 18 are omitted, at that time what will be the value of n? That will be 100 minus 3, that is 97. So summation of I is equal to 1 to 100 minus 3, I have mentioned it here, xi, that will be equal to summation of I is equal to 1 to 97, xi, that will be equal to 2000 minus, in bracket में 21 plus 21 plus 18, that will be equal to 2000 minus 60, and it will be equal to 1940. Therefore the mean will be, that is bar x, will be equal to summation of xi, I is equal to 1 to 97 whole divided by 97, it is equal to 1940. You see 1940 will be written here, divided by 97, we will get 20, and this is the required answer for me. Now in order to find out the variance, first of all you see, first find out the xi square, summation of xi square, that will be equal to summation of I is equal to 1 to 97, xi square is equal to 40,900 minus 40,900 माइनस 21 का स्क्वायर किया प्लस 21 का स्क्वायर किया प्लस 18 का स्क्वायर किया, क्योंकि ये समेशन ऑफ स्क्वायर है, हर एक ऑब्जर्वेशन का समेशन हम स्क्वायर का स्क्वायर है, स्क्वायर का समेशन है. सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 21 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर को सम करके इसे माइनस कर देंगे, क्योंकि ये हट गया है. और xi स्क्वायर कितना है, 40,900, 40,900. सो 40,900 माइनस 1,206, इसका समेशन करने पर आएगा हमारे को 1,206, दैट विल बी इक्वल टू 39,694. So sigma square will be equal to 1 upon 97, 1 upon 97, summation of I is equal to 1 to 97 xi minus 20, that is the mean. So xi minus 20, bracket close, square. So 1 upon 97 bar, this bar I is equal to, summation of I is equal to 1 to 97 in bracket xi square minus 2 into 20 into xi plus 20 स्क्वायर. अभी क्या करेंगे, समेशन साइन को इनसाइड द ब्रैकेट में लाएंगे. इसको 1 upon 97 समेशन ऑफ I is equal to 1 to 97 xi square minus 40 into summation of I is equal to 1 to 97 xi plus summation of I is equal to 1 to 97 into 400. So it will be ultimately equal to 1 upon 97 in bracket में रखिए 39,694 minus 40 into 1,940 plus 400 into 97, it will be equal to 1 upon 97. 39,694 plus 38,800 minus 77,600. After solving it, you will get 78,494 minus 77,600 whole divided by 97. It will be equal to 894 divided by 97. That will be equal to, after dividing, you will get 9.216. So standard deviation will be the root of variance, that is sigma square का root लेंगे, it is equal to root of 9.216, that is equal to
3.036, and this is the required answer of this question.